In this module, we will discuss about semiconductors and we will talk about some nanomaterials that fall under the category of semiconductors like quantum dots, some semiconducting oxides including titanium dioxide, zinc dioxide and indium tin oxide. So semiconductors unlike metals have a band gap. सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के अंदर बैंड गैप मौजूद होता है जो कि मेटल्स में नहीं पाया जाता. So what is that band gap? The band gap is between the valence band and the conduction band. Valence band और conduction band के दरमियान band gap होता है. In intrinsic semiconductors which possess no impurities, ऐसे intrinsic semiconductors जिनमें impurities नहीं होती जैसे कि बोरॉन, germanium, indium and silicon, there are no electronic states in the band gap. So their band gap contain no electronic state. उनकी band gap में कोई electronic state नहीं पाई जाती. The properties of semiconductors, in particular the band gap, are manipulated by the addition of dopants. अब जो इन सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली रिलेटेड टू द बैंड गैप, they can be manipulated by the addition of dopants. अब dopants क्या है? Dopants are actually the impurities which are able to donate the charge carriers in the form of electron. ऐसी impurities जो charge को donate कर सकती हैं या charge carriers को in the form of electron या holes. We know that the two type of electrons are present, n type and the holes which are p type. Quantum dots. Quantum dots is the famous example of semiconductor nanomaterials and they are made from different chemical materials which have semiconducting properties, and they include cadmium selenide, zinc selenide and cadmium telluride. So the size of the quantum dot is about 10 nanometer. बहुत ही कम size के होते हैं, nano scale में fall कर रहा है size. A quantum dot has a discrete quantized energy spectrum, so it can absorb a specific wavelength and emit a monochromatic color. By having discrete quantized energy spectrum, quantum dots has the ability to absorb a specific wavelength, and then they absorb a specific wavelength, they emit a monochromatic color कि एक ही टाइप का कलर वो emit कर सकते हैं. अच्छा, और वो कलर की अब डिफरेंट किस तरह वो डिपेंड करता है क्वांटम डॉट्स पे? इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज. तो साइज की डिपेंडेंस पे क्वांटम डॉट एमिट करते हैं डिफरेंट कलर्स को. कि मीन अगर एक क्वांटम डॉट 10 नैनोमीटर का है, इट इज पॉसिबल कि इट एमिट अ कलर ग्रीन, बट इफ वी go down to the 10 nanometer size like 5 nanometer or 6 nanometer, it may emit a different color like red, violet or blue. You can see in this diagram the quantum dots having different colors because they are different in size. Now let's discuss about semiconducting oxides. Semiconducting oxides like titanium and zinc oxide in bulk form are widely used in industry in many products. Industrial products में टाइटेनिया और जिंक ऑक्साइड जो हैं बल्क फॉर्म में, नैनो फॉर्म में जो है हम इनको बाद में लेके जाते हैं. They have so many application even in the bulk form. लेकिन when we go to the nanoscale, their properties is enhanced and it can be used more efficiently in that industrial products. So titanium जो है, titanium dioxide is a mineral mainly found in two forms. ये two forms में पाया जाता है, rutile and anatase. अब हर एक मटेरियल की फेज होती है जिसके अंदर जो टाइटेनिया है ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी दो फेजेस में पाया जाता है. वन इज रुटाइल एंड द अनदर वन इज एनाटेस. सो टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज द मोस्ट widely used white pigment because of its brightness and very high refractive index. So titanium is in white color, white pigment है, and इसका जो refractive index है वो काफी ज्यादा है. So it is used in paints, plastic, toothpaste, papers, inks, food and medicines. तो इसकी काफी applications हैं, paints में, plastics में, even के medicines में भी use हो रहा है.
And now we have discussed this in our previous lectures of applications of metal nanoparticle, that titania has been used in sunscreens that block the entry of the penetration of UV lights into our skin. So in sunscreens with a physical blocker, titanium dioxide is used both because of its high refractive index and its resistance to discoloration under the ultraviolet light. So the property of its due to high refractive index and resistance to discoloration under ultraviolet, it is used in the sunscreens. Titanium nanoparticle have different physical properties, like 30 to 50 nanometer size है, often refers to as nano TiO2, nano titania. Optical and catalytic properties, they also possess, retain the ability to absorb VU light, but light scattering is dramatically reduced. उनकी ability है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं व्यू लाइट को, अल्ट्रावायलेट लाइट को, लेकिन वो स्कैटर करने की एबिलिटी कम है. सो दैट टाइटेनिया गोज फ्रॉम अपीयरिंग वाइट टू ट्रांसपेरेंट. सो वो वाइट से ट्रांसपेरेंट होते हैं और कोई कलर अटेन नहीं करते. नैनो टाइटेनिया इज दस सूटेबल फॉर ट्रांसपेरेंट कोटिंग्स. सो ये ट्रांसपेरेंट कोटिंग्स के लिए सूटेबल हैं क्योंकि इनका कलर वाइट हो सकता है या ये ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं. And for new generation sunscreens which are characterized by high protective factor but transparent appearance, जो कि ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं अपीयरेंस में और उनका प्रोटेक्टिव फैक्टर भी ज्यादा हो सकता है. The catalytic properties of titania when nano-sized are also greatly enhanced by large to surface volume ratio. This thing we have discussed continuously ke when we go to nanoscale from bulk form, the surface area of that material is increased, and when the surface area is increased, they have the capability to absorb different functionalities to enhance their function. So ये जो नैनो टाइटेनिया की प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये लार्ज सरफेस एरिया की वजह से भी इन्हांस हो जाती हैं. The another semiconducting oxide is zinc dioxide. Zinc oxide has some similar properties to titania, like its nanoparticles scatter light, so it can be used for transparent VU filters in creams or coatings. So coatings में zinc oxide को भी use किया जा रहा है like titania. Like titania, it is used for solar photocatalytic remediation, but compared to titania, it has a weaker photocatalytic effect. ये solar photocatalytic remediation में भी जिंक ऑक्साइड को यूज किया गया है, लेकिन आफ्टर दैट रिसर्च the scientists came to a conclusion that the zinc oxide has weaker photocatalytic effect than titanium. Titanium has strong photocatalytic effect than zinc oxide. So zinc oxide is that it has a tendency to grow in self-organized nanostructure. Zinc oxide nanocolumns are of particular interest since low temperature photoluminescence measurements have revealed intense and detailed ultraviolet light emissions near the optical band gap of zinc oxide at 3.37 electron volt. जिंक ऑक्साइड के जो नैनो कॉलम्स हैं, दे आर ऑफ नाउ हाईली पर्टिकुलर इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक लो टेम्परेचर पे भी फोटोल्यूमिनेंस मेजरमेंट्स देते हैं, और इनका जो बैंड गैप है वो जिंक ऑक्साइड का वो 3.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. Zinc oxide can act as optical amplification medium and as a laser resonator. ये optical amplification medium और laser resonator के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं. The last one is indium tin oxide. The indium tin oxide is a semiconductor material whose main feature is the combination of electrical conductivity and optical transparency. अब जो इनकी ये दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से इसमें इसके जो मेन फीचर्स हैं, दे डिपेंड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज. वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द अदर इज ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी. इंडियम टिन ऑक्साइड टिपिकली अराउंड 90% इंडियम ऑक्साइड एंड 10% टिन. इनमें जो कॉम्पोजिशन है टिन और इंडियम की वो 90% इंडियम 3 ऑक्साइड है एंड 10% इज टिन ऑक्साइड. It is widely used in its thin film form as transparent electrodes in liquid crystal displays
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस जैसे कि टच स्क्रीन हैं, एलईडीज हैं या कुछ सेमीकंडक्टर सेंसर्स हैं, तो ये उनमें एज अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स थिन फिल्म. So indium tin oxide is an infrared absorber and is currently used as thermal insulation coating on window glass. ये infrared light को absorb कर सकता है, so ये as a thermal coating के तौर पर भी यूज होता है ग्लास विंडोज के ऊपर. Its anti-static properties make it additionally useful in applications due to the anti-static property के एक जगह पे static रह सकते हैं ये मटेरियल, तो ये इनकी एप्लीकेशंस और इन्हांस कर देते हैं, जैसे कि पैकेजिंग है एंड स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं ऐसे मटेरियल्स में जो कि इंडियम टिन ऑक्साइड से बनाए जाते हैं. थैंक यू.